Welcome back, friends. The Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray has deferred the decision on whether lockdown should be imposed in Maharashtra until tomorrow and probably for another day because Tuesday is Guri Parva. It's the New Year day. So I presume that this gets deferred. Sensible steps have been taken by Uddhav Thackeray in general. Uh, this requires good amount of consultation with the trade associations, with the center as well. And that's what he's doing. Many of the stakeholders need to be taken into confidence, and some ways need to be found out so that lives and livelihood are both protected. I think Uddhav is doing a good job. He's trying to take people into confidence, and that's what is the need of the hour. We should see a good day in the markets tomorrow. I know there are a lot of people who have been writing to me that because of rising COVID cases and the likelihood of a lockdown. Anyway, the deferment of the Maharashtra decision does not mean that the decision has been closed. They may, in fact, come out with more restrictions shortly. It's just that they are trying to discuss and take all the stakeholders into confidence, and that's the need of the hour. But on the whole, we should see a good day. 11:20 onwards, in fact, just before Europe opens, you may see a more positive movement in the Nifty. So this needs to be taken into consideration. And there are, in the wake of this new variants of the coronavirus that are beginning to appear, there is a likelihood of the Sputnik Russia vaccine getting approval by the emergency approval, I would say, by the Indian government. So Dr. Reddy's and Panacea Biotech could stand to benefit and may be considered to be as a part of your portfolio because this emergency approval, and as I understand, Panacea Biotech could be having like 100 million doses plus getting to be manufactured for use. So I think these both companies could stand to benefit because of the emergency approval of the Russian vaccine Sputnik, and maybe add it to your portfolio. I have therefore given you a synopsis of what could be expected tomorrow, the 12th of April. And I'm sure many of you would like to know where the options expiry is going to be, where is the markets headed for the rest of the week, what lies ahead, and whether there will be a transformation. There will be very different things that will begin to appear after the holiday on 12th, which will be a very rapid fire on both sides. If you'd like to know more in detail, please WhatsApp me on 982-086-1044. Please join my Premium Plus so you become a part of this whole art of investing family, and you get to learn all this in greater detail, where the options expiration will be, where is the market headed from here. भाई और बहनों, कल का दिन मुझे तो सही लग रहा, अच्छा पॉजिटिव रहना चाहिए, खास करके दिन का 11:20 के बाद, यूरोप के खुलने से कुछ टाइम पहले बेहतर प्रदर्शन दिखना चाहिए। महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने डिफ़र कर दिया डिसीजन लॉकडाउन के बारे में, जो 15 दिन की बात चल रही थी, और ट्रेड एसोसिएशन वगैरह से बात करके फिर ही निर्णय लेंगे कि लॉकडाउन रहना चाहिए महाराष्ट्र में और कितना रहना चाहिए। तो ये अच्छा डिसीजन है, उद्धव ठाकरे जी का सम्मान करते हैं, ये अच्छा सोच समझ के उन्होंने किया। स्पटनिक की जो रशिया की वैक्सीन है स्पटनिक, उसे इमरजेंसी अप्रूवल मिलने का संभावना है। भारतीय सरकार इसके लिए पैनेशिया बायोटेक और डॉक्टर रेड्डीज़ को इसका लाभ मिलने का संभावना है। आप ये स्टॉक्स ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, और जानना चाहते हैं दूसरे अच्छे शेयर्स बनने जिनकी संभावना है, ये ऑप्शंस एक्सपिरेशन कहाँ तक जाएगा, मार्केट कहाँ तक झूम सकता है, ऊपर नीचे कैसे रहेगा,
तो क्या संभावना है आगे हफ्ते, ये हफ्ते की एक्सपायरी का, और आगे भी चल के दूसरे हफ्ते में कैसे रहेगा मार्केट, ये सब जानना चाहते हैं तो मेरा प्रीमियम प्लस को जरूर ज्वाइन करिए। व्हाट्सएप नंबर है 9820861044। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करके आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग ग्रुप का आप सब्सक्राइबर बन के और ये सब चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। डिटेल में भी आपको मिलते रहेंगे। ये थोड़ा बहुत जो मैं बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनको और डिटेल में भी मैं कवर करता हूँ। दूसरे स्टॉक्स भी बताते हैं जो अच्छे बनने की संभावना है, तो ये ज्वाइन कर लीजिएगा प्रीमियम प्लस, और ये आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग ग्रुप का मेंबर बन जाइए, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का मेरा जो नंबर है 9820861044। जय हिंद, जय भारत।